OWSD. Professor Dr. Huma Baqai is a rector of Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship. She is a former associate professor of IBA. She's also a Karachi University's alumni. She's also a media person. And please welcome Professor Huma Baqai for her talk for today's event. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And as always, I'm honored and humbled to be a part of such an august gathering. मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं social scientist हूं और I can only flirt with this topic. And that is precisely what I'm going to do is, or what I picked up for myself to speak upon was that what is beyond the lab. Because आप लोग तो बेसिक साइंसेस के लोग हैं. एक तो जो बात मैं क्यों आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे क्यों लगता है कि मुझे हमेशा आपके लिए वक्त निकालना है, बिकॉज दिस इज़ अ वुमेन ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन. और स्टेम में ग्लोबली ख़वातीन जो हैं वो नहीं हैं. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में बाय डिज़ाइन ख़वातीन ख़ुद भी नहीं जाती हैं, या ख़वातीन को वो करियर ट्रजेक्ट्रीज जो बनती हैं वो डिस्करेज करती हैं कि वो इसका हिस्सा बने. सो एनी सोशल साइंसेस में बहुत ख़वातीन होती है ना, बिकॉज सोशल साइंसेस इज़ ईजी. आई एम अ सोशल साइंटिस्ट बिकॉज उस वक्त बहुत आसान था कि घर के साथ बच्चों के साथ सोशल साइंसेस की डिग्री जो है परसू की जा सके. एंड देन ऑफ कोर्स टर्निंग a job into a career for a social scientist is a choice. For a basic scientist, it's not a choice. I think when you choose to become an MPhil student, when you choose to become a PhD student, then there's no turning back. It is a career and it is a commitment, and it is one of the lowest paying jobs in the world. Yes, but by virtue of comparisons, and especially now with tech and other things taking over, it's also seen as a low paid or low return job, but the returns come after a very long time. So having said all of this, I want to congratulate that you're doing this. You're doing this with consistency, and I am going to take an entirely different perspective of it, and I hope we have an interactive session and we enjoy our talk. So and I know you've had a very amazing session yesterday. I watched you on social media. And I realized that once again you had some very good speakers yesterday also. In any environmental threat can be viewed as irrevocable. It is biological invasion. Jo irrevocable hai, and I think we are already upon it. Unlike chemicals, biological entities reproduce and spread autonomously, often over great distances, and even evolve to adapt to a changing condition. So we all know that misuse of antibiotics will create a bug which is not defeatable. Climate change will make them change their life cycles, and then they emerge to haunt the humanity, and how nature itself does not take care of it because we've messed with nature. The COVID-19 pandemic was a stark reminder of the devastation biological threats can cause. The pandemic gave rise to new dialogues about biosecurity, biorisk, and biological threats, and the understanding that science is confined to labs is flawed to begin with. It has to be a very, very critical component of all policy making. We are not, the lab practitioner is just not a practitioner. He holds the key to a safe world. And I always say that, more people die of bad politics than bad science. So there's good science happening, but bad politics does not allow good science to do the right kind of penetrations. मैंने एक किताब लिखी थी 2020 में कोविड-19 के फ़ौरन बाद. It was called The Post-COVID-19 Politics. और उसके बाद I then again wrote a monograph which was called the
uh, the politics of the vaccine. और वो politics of the vaccine was interesting क्योंकि and what made me write that was my own personal experience. जब कोविड बिल्कुल शुरू हुआ, नया कोविड शुरू हुआ, तो क्योंकि मेरा एक्सपोजर बहुत था, मेरी ट्रैवलिंग बहुत थी, तो उस वक्त एक बहुत महंगी वैक्सीन रशिया की मिल रही थी, स्पुतनिक जी, 12,500-14,000 की थी वो, जो आप लगवा लेते थे. तो आई गॉट अ फ़ोन कॉल कि जी आप, मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि जी मैं चाहती हूँ मैं लगवा लूँ वैक्सीन. आई वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड कि वैक्सीन लगानी पड़ेगी, ये फैलेगा बहुत बुरी तरह. सो आई वेंट एंड आई टुक दैट वैक्सीन एंड आई वॉज गुड. लोग कहते थे ये क्लैशनकोव से ज़्यादा अच्छी है, रशियन वो. एंड देन आई हैड टू ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स in about 6 to 8 months. And the politics of the vaccine was that US would not accept Sputnik. तो 6-8 महीने में बाद मुझे फिर फाइजर लगवानी पड़ी. And I thought it was very, very tough on me. And back then मुझे ये भी नहीं पता था, फिर तो boosters का कुछ हो गया. मुझे आज भी नहीं पता कि इतनी close vaccine लगाने का मेरी body पे क्या असर होने वाला है. Nobody's looked into it. Nobody's looked at what is happening post-vaccine paradigms. But this is the politics of science, which we need to understand. It is beyond borders, not just beyond labs. So the World Health Organization defines biorisk. There's now, by the way, biorisk and biomanagement is a policy-making field. It is accepted, deliberated upon, and is a part of WHO and both United Nations and WHO. So WHO was mandated to create a cell for biorisk and biomanagement, and then they of course came up with this definition. The probability or chance that an event caused by accidents, inadvertent or deliberate misuse of the life science can adversely affect the health of humans, non-human animals, plants and agriculture, and the environment. So everything around us may be impacted. So that is the ambit of it, so to say. Understanding biorisk management, I'm sure you understand it better than me, but when I was doing this, I was also trying to develop my understanding of the topic. So biorisk encompasses a wide range of activities involving biological agents such as bacteria, viruses, toxins, and other microorganisms which have the potential to cause harm if not managed effectively. Now, the debate that does not include this is the toxicity in the environment which allows mutation of these. And in countries that are, in cities rather, that are categorized environmentally hazardous, which includes Chennai, which includes Colombo, which includes Karachi, which includes Lahore, which includes Delhi, this is a real risk, and very little research is happening that the toxicity in the environment, they also say that it is killing some, but it is killing good and allowing the bad to thrive, and that is the new debate for third world countries especially, or countries at high risk. It also involves the use of biological agents that have the potential to directly or indirectly harm living things, for instance, causing societal injustices or economic instability. You know, you probably think about a virus, a disease, and a lab. But when I think about it, I think about the choice between shutdowns and jobs during COVID, the choice between accessibility, the choice between societal groups that can get cured and that cannot access or are exposed to a situation where they are victims with no remedial measures in place. So for me, when I look at biorisk management, or when I look, it is an issue of society, it is an issue of community, and it is an issue of politics. And then, of course, economic instability and injustices that happen. Some countries were able to manage COVID. Other countries were not able to manage COVID. One of the countries that was not able to manage COVID at all was the United States of America.
Why was it not? Because the political system was such that it could not even ask their people to forcefully get their vaccines. आपको याद है पाकिस्तान में हमने कहा था आपकी फ़ोन की सिम बंद कर देंगे. मेरा ड्राइवर के आगे मैं हाथ जोड़ गई थी कि जाके वैक्सीन करा लो, नहीं कराता था. जिस दिन फ़ोन की सिम बंद हुई अगले दिन जाके वैक्सीन लगवा लिया. And you know, all of that, until there was a cost, nobody was doing it, and then when it was free, more people opted for it. So all of those are societal constructs of a paradigm, and in countries like यूनाइटेड स्टेट्स इट डिड नॉट मैनेज. जो इंडिया की एग्जाम्पल है वो और भी इंटरेस्टिंग है. इंडिया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और मैं उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थी, मोदी भी थे, उन्होंने वहाँ आकर एक्चुअली डिक्लेयर किया कि इंडिया ने कोविड-19 मैनेज कर लिया. इट वॉज व्हेन कोविड-19 हैड प्लेटोड, इट हैड नॉट डिसअपियर्ड. वो वापस गए, इंडिया में इलेक्शंस होने वाले थे, और उसके बाद उन्होंने सब कुछ खोल दिया. Now, this was a political decision because he wanted to go into electoral politics. उसको खोलने से इंडिया में इतनी अमवात हुई और इतना मिसमैनेज था कि मेरे जानने वाले ऐसे लोग थे कि जब उन लोगों को चिता जलाने के पैसे नहीं थे, वो अपने घर के फर्नीचर को तोड़कर अपने उनकी a lot of societal implications to the whole way how biorisk is managed. So beyond the law lab, exploring the broader dimensions. Examining the socio-political dimensions involves scrutinizing the intricate relationship between scientific research, public policy, and societal resilience. It is also societal response. It is also societal compliance. It is also awareness campaigns. It is what you are ready to talk about and what you're not ready to talk about. For example, I don't know if this is related, but you know, I also was a part of a small movie which was on sanitary towels. इंडिया में वो फिल्म बनी थी और उस फिल्म का नाम था थोड़ा सा सूरज. So over there, because we attach an element of shame to menstrual cycles and overall women's reproductive system, so these girls used to recycle their hygiene towels in the sense that they had a small piece of cloth that they would wash and use again and again. So they did a study and they said that only if they dried it in the sun, they would not have UTI infections. But because they dried it in the dark, the infection thrived. And then they did an awareness campaign. But to do in the same way, I don't know, some of you must have seen a very good movie which is in India, which is called Toilet. You see how they culturally constructed a paradigm that you could not have a toilet in the house. So going to the fields became rasam, rawaj, rawayat. You see, so the science also fights against rasam, rawaj, and rawayat. I'll finish and I'll come back to you. Even though scientists from multiple countries concluded that the virus responsible for the coronavirus pandemic shifted naturally from an animal source to a human host, however, we cannot ignore the possibility of pathogens escaping accidentally from research labs and threats of deliberate manipulation to create more dangerous bioweapons. Again, very interesting stories. China ने जान के किया, अमरीकी doctors China में थे जिन्होंने किया, and how Chinese were constantly blamed for it. Although then Chinese actually turned it into an opportunity by being the largest donor of masks and vaccines and ventilators and pumps to the countries, to the world. So there's a whole lot of politics that is involved in this. But at the end of the day, bioweapons is a reality. Even in Gaza, just now, chemical weapons was used. In Iraq, chemical weapons were used. I don't know, the desperation can edge on using biological weapons because they know that the labs have not been destroyed. They exist. And again, a very political dimension to it. The Ebola virus epidemic in West Africa heightened the civil, economic, and public health systems destabilization
that can occur as the result of a naturally occurring epidemic, let alone an intentional outbreak. There's controversy to corona and COVID, but this was not intentional. The Ebola epidemic resulted in over 27,000 reported cases and more than 11,000 deaths, with an economic impact of Guinea, Sierra Leone, and Liberia rising to approximately 5% of their combined GDP in 2014 and 12% in 2015. Now, 14, and it will consistently go down. It does not go down immediately. It actually goes up and then it goes down. So the economic impact of slowing down of a society because of a disease which assumes the face of an epidemic or pandemic, तो हम भुगत के ही बैठे हैं, the whole world shut down. Epidemics also then slow down economies. और वो पहले एक slowdown कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर तो जो माशरे पे impact होता है वो बहुत critical होता है. The outbreak, along with the potential of other similar catastrophic events, illustrates that having effective global and national response plans in place are crucial in mitigating viral pathogen threats. We need policymakers. We need our scientists to be in the senates, in boardrooms. And the decisions that are made should involve people who know what it's all about. The origin of COVID-19 is hotly debated and heavily politicized. It is possible that the virus naturally spilled over from animals to humans. Another theory is that the virus escaped from a lab, most likely the Wuhan Institute of Virology, or that scientists were infected when doing fieldwork with bats. Anything could have happened, you know, and we haven't researched, we haven't gone back, क्योंकि फिर उसका political fallout होगा. जब ये research बाहर निकलेगी, तो फिर उसका एक political fallout होगा, किसकी गलती थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ. Regardless of what sparked the pandemic, what is known is that accidents happen and that dangerous viruses can escape from labs around the world, and the risk of this happening is increasing. So what you need is not just domestic or national policy, you need it at the regional level and you need it at a global level. So जो हम कहते हैं ना कि the scientific community should be across borders, and that's when a cumulative impact will happen. I mean, your organization is based in Italy and you have a chapter here. So this allows research in times of peace and management in times of risks and catastrophes. Having these linkages, these collaborations. The COVID-19 pandemic showed that there was tremendous variability in how serious different governments and their leaders dealt with the disease and how they acted to prevent its spread. The biggest risk that we were facing was that the explosion in India would impact Lahore. That was our biggest threat. In short, there were no coordinated global responses. Eventually, after infecting over 118,000 patients in over 100 countries and causing more than 4,200 deaths, the outbreak was called a pandemic by WHO on March 11th. पहले तो ये भी सियासत थी ना कि pandemic कहें कि नहीं कहें. तो किस नहज पर पहुंचे तो पेंडेमिक क्या है, क्योंकि फिर जो पेंडेमिक होगी तो फिर उसके कुछ पैराडाइम्स हैं. और उसके बाद अगर आप वैक्सीन की जो सियासत थी वो अनबिलीवेबल थी. जो रिच कंट्रीज थी उन्होंने पाइल्स जमा कर लिए वैक्सीन के, जो इस्तेमाल नहीं हुए वो ख़राब होने लगी. जब वो ख़राब होने लगी तो उन्होंने उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भेज दिया. फिर ये कि एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो कमज़ोर है और इनफेक्टिव है, and so on and so forth. But at the end of the day, what we don't understand is that this politics, every politics impacts humanity, but this politics actually kills humanity.
हाँ, pandemic, that is also a term. This is the part of the whole conspiracy theory that we constantly come, और फिर होगा. I mean, now COVID cases are being reported again. So I was in conversation with someone, उन्होंने कहा, मैडम कोई COVID नहीं आ रहा है, इनको election से डर लग रहा है. अब अगर आ भी रहा होगा, so we have a political dimension attached to it. The first action most governments took was to slow the viral spread. These actions included closing national borders, stay-at-home directives, internal travel constraints, and curfews, as well as legislative and security measures to enforce these restrictions. फिर हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता. This is only going to happen to others. And we all have it. We have it them in our houses. अरे मुझे कुछ नहीं होता. एक बेचारी जो माँ होती है ना, उसको समझती है कि उसको कुछ नहीं होता. But you know, at the end of the day, we are all human and we are all susceptible and we are all vulnerable. So awareness campaigns. It was a huge challenge for governments to order collective actions that negatively affected their economies. It was even more difficult to engage the politically alienated working class. पहले हमारे पास खाने को नहीं है, अब तुम कह रहे हो घर बैठ जाओ. यही बात थी ना. Detainees, refugees, indigenous and marginalized groups, the cognitively impaired and the illiterate in collective actions, and to adhere to public health guidelines. In Karachi, the biggest problem were the homeless, who were sleeping under bridges. In politically beggars, street vendors, all of them, everybody became a career. In politically partisan societies, ideological differences played a clear role in moderating the ability of national actors to mobilize collective action in response to the pandemic. आज भी हमें पोलियो पे किसी मौलाना को बुला के ये कहना पड़ता है कि ये हलाल है. You see, that is the problem, you know, so we have religion attached to everything. And अच्छा, interestingly ये बात है कि जो लोग दो लोगों को बिलीव करते हैं सबसे ज़्यादा, एक तो मजहबी रहनुमा को बिलीव करते हैं, एक डॉक्टर को बिलीव करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को बिलीव नहीं करते. बिकॉज द साइंटिस्ट एक तो बेचारा खुद कंफ्यूज होता है क्योंकि वो रिसर्च कर रहा होता है, यू नो, सो ही कैन गिव अ यस और अ नो. द साइंटिस्ट विल से दिस मे हैपन. अ साइंटिस्ट विल ऑलवेज से this is a possibility. The scientist will never say, no, tomorrow you'll die. The doctor can say, tomorrow you'll die, and the religious person can say, tomorrow you'll go to hell. So they can create the urgency to make you respond immediately. In politically partisan societies, okay, so I think we did that. Okay. In 155 countries across Asia, the America, Africa, Oceania, and Europe, an analysis of the positive peace index was conducted. It showed that countries higher on indicators of peace were better prepared for the pandemic as measured by testing capacity, number of cases, and the test positivity rate. Now, this is a very abstract concept. You also recover better when you have a will to recover. ठीक है ना जी, आप कहते हैं ना उसकी जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो गई है. So, and where do you want to live? You want to live in peaceful, happy, harmonious environments. How science is related to peacefulness of the society is not even talked about. हम बात ही नहीं करते ना ये कि जो अमन है, जो सुकून है, जो खुशी है, वो किस तरह रिकवरी से जुड़ी हुई है. So the analysis encompassed the indicators of governments functioning, equitable distribution of resources, acceptance of human rights, and low levels of corruption, which were well found to be related to the severity and impact of COVID-19. जिनको आदत है करप्शन की, वो वैक्सीन लगाने में भी करप्शन करेंगे, वैक्सीन बेचने में भी करप्शन करेंगे, उसमें तो वो सोसाइटीज जो हैं वो स्ट्रगल करेंगी. जी एग्जैक्टली. सो एक मैं हमेशा, और ये बात मैं अच्छे में कहती हूँ, मजाक में नहीं कहती हूँ मैं, यू नो, इट मेड लैब्स द किंग. यू सी, जो नेटवर्क ऑफ लैब्स, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो नेटवर्क ऑफ लैब्स इमर्ज हुआ और जो टेस्टिंग पैराडाइम्स हुए, फिर आपको याद है वो एक ट्रैवलिंग से पहले आपको एक वो चाहिए था, तो वो घर आते थे,
तो वो जो मेरे घर आया वो बाहर मेरे टेरेस में बैठा उसमें एंट्रेंस पे और कहने लगा पज्जी बना दूं. मैंने कहा हाँ बना दो. He took the money and he left. And so you see, it is going to have an impact. If I was COVID positive and I traveled, I infected an entire plane. So that is the cost of societies, the scientific cost of societies that don't understand. तो करप्शन है ना ये सारा. Exactly, मैं ऐसे ही कह रही हूँ ना कि मतलब मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैंने उसको 700 रुपए दिए, उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया. इसी तरह मुझे याद है जब एक दफ़ा हम इंडिया जा रही थी तो इंडिया ने कहा था कि पोलियो के बगैर नहीं आप नहीं आ सकते. वो पॉलिटिकल मूव था. वो भी एयरपोर्ट उन्होंने कहा अच्छा इंडिया जा रही हैं पोलियो का सर्टिफिकेट टक. So this is all a part of who we are, but sometimes it is a huge risk. Socio-political, okay. Due to COVID-19 pandemic, nearly 90% of the world economy was under some form of lockdown, disrupting supply chains, depressing consumer demands, and putting millions out of work. Consumerism went down. Retail collapsed. Online thrived. Every risk has an opportunity. In welfare societies, गवर्नमेंट ने हर एक को पैसे भेजे. तो जो वेलफेयर पे थे उन्होंने कहा पैसे आ रहे हैं अब काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं. So you see, this is what that needs to be discussed, debated and understood. आप कुछ कहना? मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी मैंने विजिट किया अमेरिका तो पता लगा हर जगह पर लगे हुए हैं पोस्टर्स के दे नीड हेल्प, दे वांट टू हायर पीपल. लोग आने को तैयार नहीं है क्योंकि घर पैसे भी मिल रहे हैं. और मैं 2 दफ़ा आई वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग कोविड का जो पीक का ज़माना था, एंड दोनों दफ़ा मैंने कभी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टोर्स को इतना डिप्लीटेड नहीं देखा. सो द सप्लाई चेन्स वर डिसरप्टेड टू अ पॉइंट. एंड देखिए फिर वो आपको सबको याद है ना, द पैरानोया, द टॉयलेट रोल इशू. यूएस जो था वो सिर्फ टॉयलेट रोल्स खरीद रहा था. उसको लग रहा था कि the people who hogged on supplies. तो सोसाइटीज़ में 2 तरह के सेक्शंस इमर्ज होते हैं. एक सेक्शन जो हेल्प करना चाहता है, तो लोग राशन मोबिलाइज कर रहे थे. एक सेक्शन जो कहता है तो आप भाड़ में जाएं मेरी ज़िंदगी ठीक रहे, तो वो राशन होर्ड कर रहा था. So you see, so you also people are these are all repercussions of the society, the way societies are built. आपने माशरों को, बच्चों को मदद कर, और ये इस हर घर में जो ये हो रहा था वहाँ बच्चे बड़े हो रहे थे और इंटरनलाइज कर रहे थे और सीख रहे थे. और फिर ये लार्जर सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्ट्रक्ट है कि आपके पास कैसे माशरे हैं, और फिर जब आपके पास ऐसा कोई इशू आएगा तो आप किस तौर उसको एड्रेस कर पाएंगे. In 2020, global gross domestic products declined by 6.7% as a result of the coronavirus pandemic outbreak. The pandemic caused an estimated 34.3 million people to fall below the extreme poverty line in 2020. The economic implications were tremendous. An additional 130 million people joined the ranks of people living in extreme poverty by 2030, dealing a huge blow to global efforts for eradicating extreme poverty and hunger, which essentially means कि जो SDGs थे, जो आपके global objectives थे, वो सब compromise हो गए इस 2 साल के badly managed bio risk. This is what it is. Essentially, अगर आप इसको boil down करें, तो it comes down to that. The pandemic disproportionately hurt the low skilled. अच्छा, फिर किस society को impact करेगा और किस society को impact नहीं करेगा? तो हमेशा बीमार भी vulnerable ज़्यादा होगा, मरेगा भी vulnerable ज़्यादा, नौकरी भी vulnerable की ही ज़्यादा जाएगी, गुर्बत के लकीर से नीचे भी vulnerable ही जाएगा. तो ये दुनिया इस तरह बनी है, और वो जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी इससे इम्पैक्ट नहीं होती, वो नहीं चाहती कि ये दुनिया बदले. So science is also about status quo.
lived in extreme, dealing a huge blow to global efforts. Okay, the pandemic disproportionately hurt, ये हमने मेरा ख्याल कर लिया, and inequality also between countries. National response to biological threats. It is important for states to review domestic measures needed to predict, prevent, and respond to both natural and man-made biological threats. These measures include periodic training. If it has happened today, there is nothing that tells us that it is not going to happen again. तो कुछ इदारे फायर ड्रिल की ट्रेनिंग करते हैं, कुछ इदारे नहीं करते, कुछ इदारों का तो एग्जिट भी नहीं होता, अर्थक्वेक की भी करते हैं। आग पूछ के तो नहीं लगेगी और बता के भी नहीं लगेगी, और जिन इदारों में इसकी फहम नहीं होती वहाँ आग लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। द सेम गोज फॉर सोसाइटीज़। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़। आपको पता है कि एक सिंध और पंजाब का भी एक क्राइसिस इमर्ज हुआ था कोविड मैनेजमेंट में। यूएस में भी यही हाल था, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट रिस्पॉन्स थी। Introducing clearer and stronger incentives for personnel to identify and report disease outbreak among plants, animals, and humans to strengthen the disease surveillance network. This essentially means, from a political science perspective and from a sociologist perspective, are we a listening society? We are not a listening society. हमारे यहाँ तो कोई आके कहता है कि ये हो गया तो कहता है कि कच्ची FIR काट लो या ना ही काटो. So we, as a nation, we don't trust our children, we don't trust our servants, we don't trust each other. We doubt everyone. हम सोचते हैं ये आके ये बता रहा है तो इसमें इसका क्या मफाद है. So we are not a listening society. And of course, introducing clearer and stronger incentives. Aggregating data. मैं अभी आप में से कुछ लोग शायद उनको जानते हो, अज़रा रज़ा. शी इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर पे काम करती हैं, और वो ये कहती हैं कि जो कैंसर के साथ हमने ड्रामा किया है वो हमें करना बंद करना चाहिए. लेकिन उन्होंने एक डेटा डिपॉजिटरी क्रिएट करने की कोशिश की, और वो शी इज़ इन वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड in the United States. She's, by the way, a law graduate. तो उस वक्त उनको लोगों ने कहा, and again not a listening society, तो उन्होंने कहा नहीं, इस डेटे का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम नहीं ये कर रहे. उन्होंने अपने घर में फ्रीजर्स रखकर जितने पेशेंट्स उनके पास कैंसर के उन्होंने अपनी 40 years of सर्विस में ट्रीट किए, उनकी एक डिपॉजिटरी क्रिएट की है, और अब स्टेट उस डिपॉजिटरी को ओन कर रही है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा. डाटा एनालिसिस, डाटा क्रिएशन. मतलब हम सोचते हैं ना कि साइंस जो है वो दिहाइयों पर चलती है. देयर इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. जब कोविड की फटाफट वैक्सीन बन गई तो ये भी जहन में सवाल था कि ये वैक्सीन क्या करेगी. हमें अभी भी नहीं पता ये वैक्सीन क्या करेगी. जिस थोक के हिसाब से मुझे और आपको लगाई गई है, we have no idea. कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं. We don't know. और ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ी गेम थी, क्योंकि यहाँ पे तो इतना इम्पोर्टेंट था कि आपको कोई एयरलाइंस बैठने नहीं देती थी कहीं जब पे भी तक नहीं आप देना. जब आप अमेरिका एंटर होते हो तो आपसे पूछता भी नहीं कि आपने वैक्सीनेशन करवाई. नहीं जी, मैं 2 दफ़ा US गई और मैं बहुत वहाँ पे भी ख्वार हुई, और टेस्ट वहाँ पे भी कराना पड़ता था. So, because I traveled, because my daughter was in Baltimore and she was working in a COVID unit, and I went and I took that risk to travel. बहुत anxiety थी पूरी दुनिया में, लेकिन collaborative response नहीं थी. क्योंकि वहाँ तो ओपन है कि आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगाएं. वो इसलिए कि वो सोसाइटी ऐसी है ना. मैं आपसे ये कह रही हूँ ना, ये हम भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, लेकिन हमने डंडा मार के वैक्सीन लगा दी ना. हाँ, इन द एंड हमने कहा आपका बस कसर रह गई थी कि जीना बंद कर देंगे, वैक्सीन लगाएं. आप आनिए वापस. So these are societal responses construct. चाइना में शुरू हुआ. चाइना मैनेज्ड इट रियली वेल बिकॉज उनका लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है. So science and biorisk management is critically related to political systems. So ये जो personal freedom है ना, ये personal freedom क्या है
और किस हद तक इसकी इजाज़त देती है. मतलब मेरे हिसाब से पर्सनल फ्रीडम इज़ दैट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस. So I have no problem with alcohol, that's personal freedom, but I have problem with alcohol induced driving, because then that's my problem. So if you get on the street under the influence of alcohol and you kill someone, then that's my problem. Developing common disease reporting standards, creating an epidemiological model for diseases through collaboration between government, scientists, academicians, industry, epidemiologists, and data scientists. And essentially collaborative models. Interesting बात है, बाज़ लोग शायद हमसे कहेंगे कि अल्लाह का इंसाफ है. गज़ा की सूरत हाल आप सबको पता है इस वक्त क्या है. अब ज़ाहिर है गज़ा में बीमारियां फूटने लगीं बेइंतहा. तो जो इजरायली ऑफिसर्स गज़ा की ग्राउंड ऑपरेशन के बाद वापस जा रहे हैं इजराइल में, उनको इजरायली गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो बीमारियां लेके आ रहे, ये तो थ्रेट रिस्क है, क्योंकि इनके तो एक्सपोजर्स हो गए हैं. और विच इज़ एक्चुअली अ फैक्ट. बट this is what life is. You cannot confine human misery. If you inflict human misery will catch up with you. Implementing capacity building measures, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये आप मुझसे बहुत बेहतर समझते. This is developing a formal biosecurity policy. WHO के बाद, by the way, आपको ये बात पता होगी कि ये अब उन्होंने मैंडेटरी किया है कि तमाम हुकूमतें जो है वो एक बायोसिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो डेवलप करें. कुछ कंट्रीज़ के पास है, कुछ कंट्रीज़ के पास है, लेकिन फॉर पाकिस्तान आई ऑलवेज से दिस दैट वी आर वन ऑफ, मुझे नहीं पता पाकिस्तान की बायोसिक्योरिटी पॉलिसी है या नहीं. आई ट्राई टू लुक अप, मुझे नहीं पता चला. बट आई टेल यू दैट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजिस्लेटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. Most legislated in everything. Despite that, we are also where human rights violations are also highest. So legislation enough is not sufficient unless you have political will, desire, understanding, awareness to make that legislation meaningful. The global challenges are pandemic preparedness and response, bioterrorism prevention. कोई एक मुल्क, और अब हमें ये समझ में आया है कि कोई एक मुल्क किसी भी सलाह से बालातर होकर कुछ भी कर सकता है. मतलब जो गज़ा में पिछले 80 दिन से हो रहा है वो इस बात का अकास है कि हमारे पास एक्चुअली कोई इंटरनेशनल रिस्ट्रेनिंग फिनोमेना नहीं है. और अगर कल वो टेम्प्ट होके बायो टेररिज्म पे चले जाते हैं, क्योंकि केमिकल वेपन्स तो यूज़ हो रहे हैं, या कल कोई दुश्मनी में दे वांट टू पॉइजन योर वाटर्स, और पैथोजेंस आप पे छोड़ दें. एंथ्रेक्स की कहानी हुई थी, आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स में. सो इसी तरह हाँ पाकिस्तान. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर विल द बक स्टॉप, एंड वी नीड टू मेक द बक स्टॉप. बाय द वे, पाकिस्तान इंडिया के बारे में बड़ी अच्छी बात कही जाती है. वी फॉट 3.5 or 4 wars. All of them have been very civilized. So Pakistan, India, actually, that is a fact. We fight very civilized wars. Because the geographical proximity is a risk of high potential reaction. Laboratory safety, global health security, and of course, at the end of the day, the biggest problem today's world is environmental protection. Scientific collaboration, ethical considerations, and cross-border disease controls. I'm not reading it, but I thought I will just go through it. Now, the ethical challenges balancing society advancement and security concerns. Biorisk management involves handling and controlling biological materials to prevent accidental or intentional release of human agents. इस पे अब एक consensus है कि ये एक चीज़ है. Ethical challenge in biorisk management arises from the need to balance scientific progress, public safety, and the potential for misuse. Some key ethical challenges include dual-use dilemma. The dual-use मतलब करना भी, मतलब there's this gray area, और आप लोग ज़्यादा समझते होंगे. The dual-use dilemma refers to situations where research or technologies developed for beneficial purposes may also be used for
harmful purposes. न्यूटन ने न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बेनिफिशियल पर्पस के लिए बनाई थी. And he cried when the nuclear explosion was done. He was very, very unhappy. वो एक मूवी आई थी पिछले दिनों, Oppenheimer. I mean, that's an eye opener. That's a very good movie. और उसमें उसको उन्होंने फिर भी उसको बड़ा अच्छे से किया. इससे the facts on the ground were much more brutal. So that is the dual use dilemma. Ethical challenge: researchers and institutions must navigate the fine line between advancing scientific knowledge and preventing the potential misuse of that knowledge for harmful activities. Animal testing, huge debate. Do it or not do it? You know, is it worth it? Is it not worth it? And that we all know that animal testings happen, and they happen all the time. They are done on mice, they're done on rats, rodents, pigs, also a lot of other things that we don't find out about. Rabbits पे बहुत सारी होती है. So the whole ethical challenge to a cost-benefit analysis. Informed consent and transparency, because there are also human trials. You involve human beings in trials. I personally know a friend who contracted AIDS. And I know this girl myself. उसको एड्स हुई, माँ बाप ने भी डिसोन कर दिया, शौहर ने भी डिसोन कर दिया. वो बच्ची को एड्स डेंटिस्ट के पास से हुई थी. सो वो उसके 2 बच्चे भी थे. देन शी ऑफर्ड herself to a Chinese program for research. And she flew to Beijing. वहाँ 12 दिन टेस्ट हुए उसके. उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि चाइनीज़ ने उसे जहाज़ में बिठा के वापस भेज दिया. उस बच्ची को मैं आज भी जानती हूँ. शी सर्वाइव्ड. उसने फिर अपनी, हम सब ने भी कहा कि जितनी ज़िंदगी है अपनी ज़िंदगी बिल्ड करो. और एंड देन हर हस्बैंड ऑल्सो रियलाइज, डिवोर्स कर चुका था, सपोर्ट करने लगा. बहरहाल, बट सोसाइटल डेस्परेशन, लेकिन कोई ही ह्यूमन टेस्टिंग हो रही थी ना. और इसमें कितना कंसेंट था, क्या उसको बताया गया था कि उसके साथ ये सब हो सकता है. आर इम्पॉर्टेंट एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिसर्च. मतलब हम तो सोशल साइंसेस की रिसर्च करते हैं तो हम इंटरव्यू लेने से पूछते हैं आपका नाम जाए या ना जाए, एनोनिमस कर दे. लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च है वो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. So, informed consent involves ensuring that individuals involved in biorisk-related research understand the potential risks and benefits. Transparent communication is crucial to maintain public trust. Balancing the need for transparency with the imperative to protect sensitive information is a challenge, particularly in fields where research details may be sensitive or classified. Human research होती हैं. Human beings offer themselves for research. कैंसर में जो कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वो अपने आप को ऑफर करते हैं, बट बाय कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. दे आर कंट्रोल्ड ग्रुप्स एंड दे आर अदर ग्रुप्स. Equity and excess. Equity and excess involves ensuring fair distribution of benefits and risks associated with biorisk management, including access to resources and benefits from scientific advancement. For example, they say कि एड्स का एक सस्ता इलाज है और बहुत सारी दवाइयों का एक सस्ता इलाज है जो फार्मास्यूटिकल माफिया मार्केट में नहीं आने देता. So there is the overuse of medicine, the whole dimension of ये आपके टॉपिक से थोड़ा सा हट गया क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ. Whether you're diabetic or not, determining the baseline of when you are diabetic without keeping in mind the demographic paradigms. मतलब जो डायबिटिक यूएस में है उस फ्रेमवर्क में वो हो सकता है साउथ एशिया के बाद डायबिटिक ना हो. सो हम वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स हर जगह लगाते हैं, उनको इसमें फैस फ़ायदा होता है क्योंकि दवाइयाँ बिकती हैं. सो दिस होल थिंग इज़ सो मर्की एंड दिस सो मच मोर रिसर्च एंड अवेयरनेस एंड वॉइस. मतलब हमें लगता है साइंटिस्ट लैब्स में हैं, उन्हें बाहर आके बात नहीं करनी है. मुझे लगता है हर साइंटिस्ट को बाहर आके बात करनी चाहिए. So those are ethics of equity and access. There can be disparities in access to resources, training, all of that. Okay.
Then security versus हम academic freedom कहते हैं. आप लोगों को scientific freedom चाहिए होता है. We also look for academic freedom, but yes, both security versus scientific freedom, balancing the need for national security and preventing misuse of biological agents with the principle of scientific freedom and openness. You see, when a scientist is researching, he does not know the politics of the thing that is happening. And sometimes it can get out of his hand, so you have to have a policy layer. Ethical challenge, implementing security measures without impeding scientific progress and international collaborations can be challenging. Striking the right balance between security concerns and the free exchange of scientific knowledge is an ongoing ethical challenge. मुझे बहुत सारी examples याद आ रही हैं और ये बिल्कुल अभी recently मुझे नहीं पता इसका direct link है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ share कर लूँ. और मुझे ही बताइएगा मेरा वक्त कब ख़त्म हो गया, फिर मैं I'll finish. शुक्रिया. So मेरी बेटी के साथ एक बच्चा काम करता था मेक्सिको, and he was at Johns Hopkins University. So one day he was found in his washroom dead. उसकी माँ ने फ़ोन किया हॉस्पिटल वालों को, हॉस्पिटल वालों ने कहा उसकी तो आज ड्यूटी है लेकिन वो आज आया नहीं. उसने अपार्टमेंट वालों को फ़ोन किया, अपार्टमेंट वालों ने कहा कि हम खोल नहीं सकते जब तक पुलिस ना आए. तो देन शी कॉल्ड द पुलिस एंड द पुलिस केम एंड दे ब्रेक ओपन किया अपार्टमेंट. अपने हॉस्पिटल जाने वाले कपड़ों में बिल्कुल तैयार था, बट ही हैड कोलैप्स्ड इन द वॉशरूम. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये आई दैट ही हैड डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक. 31 years old, 31 साल का लड़का था. जब रिसर्च हुई तो पता चला कि क्योंकि वो एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट में था, he had taken a drug from there for a high over the weekend, had an overdose and died. So these are the dilemmas that we struggle in this world every single day. और अब उस हॉस्पिटल की जो कमेटी बैठी उसने बड़े मज़े की बात की. ये मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मेरी बच्ची वहाँ है तो उसने मुझे बताया. शी सेड मामा हम सब इतने नाराज़ हैं क्योंकि जो हॉस्पिटल की कमेटी बैठी उसने कहा कि ऐसा बंदा जो मेंटली स्टेबल नहीं था उसे एनेस्थीसिया में रखा क्यों. मतलब आपके वीक थे, वो हॉस्पिटल से स्मगल कर सका, कुछ था. सो अब आई मीन इट इज, ये कितनी मुश्किल दुनिया है. उनको अपने आप को बचाना है, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता क्या है. और मैंने उससे कहा बेटा दीज थिंग्स हैपन. कहने लगे मामा यू नो एज डज दिस टू यू, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. एनीवेज मुझे लगा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ. इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड गवर्नेंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट. Then there is a ethical challenge to international collaboration also. This is not a joke that पाकिस्तान से अब फिज़िक्स में लोगों को एडमिशन नहीं मिलता. मैं एप्लीकेशंस लिखती हूँ, मैक्सिमम एडमिशन पाकिस्तान से वो लोगों को देते हैं रिलीजियस स्टडीज़ में, सोशल साइंसेस में, सॉफ्ट साइंसेस में. जो हार्ड कोर साइंसेस हैं, बिलखुसूस फिज़िक्स and chemistry, which can lead to the development of nuclear programs, a lot of countries are discouraged from getting admissions to those universities. The paradigms that they have, or the research facilities that they have, or the resources, because science is expensive, research is expensive, extremely expensive. हमारे को रास्ता बंद है. हमारे यहाँ अपने पास ना resources हैं, ना फ़हम है, ना ख्वाहिश है कि कोई ऐसा पैराडाइम अंदर से डेवलप हो. आपकी औरक की हेड यहाँ बैठी हैं, शी इज़ ऑल्सो वर्कड विद मी एट माइट. मुझे पता है कि कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लैब्स में इस वक्त मटेरियल नहीं है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, और ब्लैक बोर्ड पे आप इक्वेशन बताते हैं और वो एक्सपेरिमेंट होता है. ये तो कत्ल है, ये ज़्यादती थोड़ी है, ये तो कत्ल है. I'll conclude here. और मेरी कोई बात ना आगे बार गुजरी हो तो मैं माजूर चाहती हूँ. In conclusion, by understanding the broader implications of biorisk management, stakeholders can develop more robust policies that safeguard both scientific advancement and societal well-being. जब आप साइंस के लिए रिसर्च के पैसे मांगते हैं ना,
तो उनसे ये नहीं कहें कि हम साइंस के लिए रिसर्च के पैसे मांग रहे हैं, आप उनसे कहें कि हम आपकी बका के लिए पैसे मांग रहे हैं. Because that is something they will understand. People already understand when you tell them that the risk is high. Otherwise they don't. मतलब कहेंगे 50 साल बाद ब्रेक थ्रू होगा, वो आपको टका भी नहीं देने वाले, उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तब. So you need to tell them that it's something that's going to happen tomorrow. There is a need for an international framework to establish values and principles of biorisk management and guidelines to develop and implement governance tools and mechanisms, but also an authoritative international institution with a mandate to systematically register and track maximum containment facilities and to oversee extremely high risk research. जिस तरह आपके पास nuclear eyes and ears है ना, you have 5 eyes in the world. I think you need exactly the same mechanism for high risk scientific research. A collaborative model which is beyond politics. The discussion is an attempt to contributing to the ongoing discourse on responsible science and governance, offering insights that can help shape future practices and policies in the ever-evolving landscape of biorisk management. बहुत बहुत शुक्रिया. कोई सवाल है तो मैं I'll be very happy to answer questions. आप सवाल पूछना चाह रही थी? Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much. That was a wonderful, wonderful talk. It was both treat to eyes and mind and soul. Thank you so much. And the energy that you spoke, I just loved it. Thank you so much. I have just one question for my own understanding from the perspective of a socio-economic and environmental issue. Last month, as you know, that COP28 happened at Dubai, and I have heard and I have read that it's going towards the failure, that because the main goal of COP28 was that we have to cut down, or we have Carbon to yeah, exactly, and they use the word fossil fuel in exchange of the greenhouse gas emissions or carbon emissions. So just for my own understanding, where do you see this COP28 scenario in an ambit of socio-economical and environmental challenge? It's just for my own understanding. I know it's not. Essentially, I have covered COP for several years now. COP is an exercise in compulsion where the most powerful in the world are still not ready to compromise. So we talk about sustainable development. We are still trapped with the seduction of development. The seduction of development is high. Cutting down trees to build housing authorities, we all need a home. The seduction of having a private car, the seduction of air conditioning, the seduction of refrigeration. Every step taking us away from nature and adding more to carbon infusion. Then there's the politics of we don't produce carbon, so don't stop our development. You've been responsible for the mess that there is, so you should shoulder the responsibility of clearing the earth. Some states take that. Australia थोड़ी बहुत लेता है, Japan लेता है, Finland लेता है, अमेरिका बिल्कुल नहीं लेता है, China अब कुछ लेना शुरू किया है, but जो largest emitters हैं कार्बन के वो US है. फिर जो और उससे ख़तरनाक बात है जिसकी बात नहीं होती वो है untreated nuclear waste, industrial waste and human waste into the waters. So in time the पूरा जो ecosystem है हमारा वो तबाह हो जाएगा. Is there a commitment to address it? The answer is no. There is still a lot of lip service. Last year एक Brazilian लड़की है जो she's a very young environmental activist. I think she's 18 or 19. और वो UK में हुआ था तो उसको बाहर आई तो सारा मीडिया हुआ ना, उसने पूछा क्या हुआ अंदर, कहती है blah blah blah. There was nothing. So I found that वो फिर बड़ा quote हुआ उसका response. You see, that is the problem. We are seduced by immediate gain. The ability to see beyond. मतलब हर वो शख्स मैं शामिल
जो अपने घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करता है टूटी हुई बंदूक के साथ, जो किसी दिन मुझ पर यार पर ही चल सकती है, इट इज सो बैड, वो समझता है कि वो कराची में सेफ हो गया. दैट इज नॉट ट्रू. हर दफ़ा ये बोतल का पानी पी के में और आप समझते हैं कि हम सेफ हो गया, आपको पता है इस बोतल में क्या भर रहे हैं? यू हैव एनी आइडिया? और फिर हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लास्टिक उसको. तो ये सोच जो है वो, और जो इसका ऑल्टरनेटिव, वी जस्ट टू लेजी. मतलब ग्लास, अगर एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल हो और ग्लास की बोतल में पानी भर के रखें. मैं बड़ी हुई हूँ, घर में पानी उबलता था, बोतलों में भरा जाता था और फिर फ्रिज में रखते थे और वो पीते थे. और जब मैं कहीं जाके बोतल खरीदती थी तो मेरे वालिद डांटते थे कि ये क्या, नहीं ये खर्चा करने की, मतलब व्हाई डू बाय वाटर, यू डोंट हैव, यू कांट बाय वाटर. आई कांट टेल माय चिल्ड्रन नॉट टू बाय वाटर. आई बाय वाटर नाउ. नल से पानी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, नल से पानी पीते थे, फिर वो फिटकरी याद है आपको, वो एक फेर ली या पानी उबाल लिया. ये शायद वो बेहतर तरीके हैं क्योंकि ये आपकी नजरों के सामने हो रहे हैं. तो आई मीन वी हैव completely allowed ourselves to be morphed by western propaganda. ये नेस्ले की बोतलें हैं, they make huge amount of money. मैं अपनी क्लास में हमेशा पढ़ाती हूँ कि तुम्हें पता है कि एक आलू को तुम 20 रुपए का आलू है और तुम 80 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते हो. You see, and the oil is bad, the packaging for it is bad, the preservative is bad, but we are seduced. We are seduced by profits, and we are not allowed to question. और हमें लगता है कि माशरे के इस हिस्से का हिस्सा बनने के लिए ये सब करना ज़रूरी. ये हमारा मसला है ना. हमें लगता है कि हमें इनका हिस्सा बनना है. तो बेचारा जाफर जी प्योर लेदर फेंकता है, मैं भी बाहर का बैग लेके फिरती हूँ जिसमें सिर्फ लेदर की टेपिंग्स होती हैं. You know, you want to become a part of a system which is collapsing. It is actually collapsing, and I think China has done a great thing. It's done a lot of indigenous things. मैं अभी बीजिंग में थी, कोई मेरा ख्याल है 1 महीना पहले. आई वॉज इन बीजिंग फॉर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल हुए थे. मुझे वहाँ एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई. वहाँ पे बहुत बारिश भी होती है और मौसम भी बहुत सर्द होता है, लेकिन उन्होंने बहुत साइकिल्स और बाइक का कल्चर क्रिएट किया हुआ है. तो वहाँ पर एक वो मिलता है, बाइक ब्लैंकेट. इट्स अ बाइक ब्लैंकेट. वो उसकी हुड है जो आपने सर पे पहन ली, और वो पूरा बाइक के हैंडल्स पर और आपके हाथों पर, वो बाइक पे लग जाता है. वो आपको हवा से भी बचाता है, बारिश से भी बचाता है, मौसम से भी बचाता है. एंड पीपल कंटिन्यू टू यूज बाइक्स इन हार्श वेदर्स. So it is about coming up with indigenous solutions, you know. This is I think मैं तो इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एज अ सोशल साइंटिस्ट मुझे लगता है बहुत छोटा कदम उठा के बहुत बड़ा काम हो सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया. Excuse me. There's another question, of course. जी. Assalamu alaikum. Referring to the initial portion of your lecture where you were talking about the politics related stuff, and you said about something that I don't want to mention a name, and I have seen this a lot many times, that we talk and we go like, I don't want to mention the name of the company or the person and stuff like that. Don't you think that's part of politics too, and that should not be done? We should whistle out people. I agree, but we should whistle out people at the right forums. क्योंकि ये तो अल्लाह का हुक्म है, तुम पर्दा डालो, मैं तुम्हारा पर्दा डालूंगा. Assalamu alaikum, ma'am. Very wonderful presentation. I loved your presentation. Okay, first of all, I wanted to thank you for touching the topic of bioterrorism, because this is very much. इस पे अब बहुत रिसर्च हो रही है. Yes. वैसे बायोटेररिज्म पे Yes. बहुत काम हो रहा है. So और बहुत डरते हैं लोग बायोटेररिज्म yes, से. of course, YouTube is filled with videos, talking about all the countries having some undercover, top secret labs where, yes. सबके पास ये वाली पैथोजन लैब्स हैं. Yes. So, what can we do to protect ourselves from such attacks, biowarfare? And because biowarfare has been there for
even before the advent of biotechnology, like during I crusades, they used to send lepers in Muslim soldiers' water supplies. I really don't have an answer to that question Okay. because Gaza has shocked me to a point where I don't know what to say. And I was very, vehemently speaking about Gaza. मैं बहुत गज़ा पे बात कर रही थी और मुझे दुख भी है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा. मेरा ख्याल है कितनी 8,000 डेथ्स हो गई हैं, नहीं 18,000 डेथ्स, 18,000 डेथ्स and about 9,000 children and no children left. और कोई रोकने वाला नहीं है. लेकिन उसके बाद जब मैंने बलूचिस्तान और तुर्बत की सूरत हाल देखी तो मैंने गज़ा के बारे में बात करना बंद कर दी. हम अपने अपने हलकों में अपना अपना जुल्म करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए मेरा तो बड़ा सिंपल सा टेक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. इट्स आर्टिफिशियल. So it's going to replace a lot of common people, but it's not going to replace even one extraordinary person. It cannot. It's a tool. मैं आपको बताऊं जब लाउड स्पीकर आया था ना तो हमारे मौलवी हजरात कहते थे कुफ्र अंग्रेज का हथियार है, इससे अजान नहीं दी जा सकती. कहते थे. मुझे आज किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार के दिखाए. ठीक है. They will not let you do it. So artificial intelligence is new. Learn it. मुझे बात ख़त्म भी करनी है, आपसे इजाज़त भी चाहूँगी. मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक जुमला हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ और मैं ये पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहती थी. It's like a wild horse. So if you learn to ride it, you will fly. Otherwise it will trample you. To learn it, control it, use it. It's artificial. अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हारे जैसे किसी दिमाग ने उसको बनाया है. So I don't see artificial intelligence as a threat at all. It's about getting to know it. जैसे computers थे, मैंने तो टाइपराइटर पे टाइपिंग सीखी थी. ठीक है. I used to do a typewriter thing. मतलब मैं थोड़ी ancient हो गई हूँ, but yeah, I did that. Question, yes. Ma'am, first of all, indeed, it's a very insightful, pragmatic, and perspicacious talk of the day. Initially, we learned a lot from Dr. Qureshi, and now it covers a huge paradigm, and it's actually a comment. I would like to add something to your speech. Basically, today we are talking about navigating biorisk management in Pakistan. It's a very high time topic. Ma'am has just highlighted about the sanitary use of sanitary items for women and the movie in which she worked. Truly speaking, India is doing a very good job. Their social media, their, I must say, television media, their movies are actually navigating biorisk management in Pakistan. There is another movie which I think, if I can remember correctly, its name is Padman, which promotes gender sensitivity, care, gender equality, social cohesion, and acceptability among the women for recognizing what they are doing wrong by an opposite gender. Dr. Saiba, it's not just, माँ है जो बच्ची को कहती है कि क्या हुआ अगर दर्द हो रहा है तो होता ही है. आप माँ ये कहती है ना क्या हो गया, मतलब तुम्हारा ना तो दर्द मैटर करता है, तो आप 9 साल 11 साल 12 साल की बच्ची को ये इंटरनलाइज करा देते हैं कि तुम्हारी तकलीफ की अहमियत नहीं है. ये हम करते हैं क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ होता है. You see, so I think you need to understand that pain, whether for men or for women, is real. और जो patriarchal societies होती हैं, या मेरे थोड़े से मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं भाई, वो मर्दों के लिए भी बहुत तकलीफदेह होती हैं, सिर्फ औरतों के लिए तकलीफदेह नहीं होती.
क्योंकि आप उनके ऊपर इतना बोझ डाले रखते हैं और बोझ बांटने को आप मर्दानियत पर सवाल कर देते हैं। मुझे जब आज बुलाया जा रहा था तो मैं बहुत डर रही थी और मैं डॉक्टर साहबा को नो नहीं कहती, तो मैंने कहा कुछ कर दूंगी, लेकिन बस मुझे ये था कि ये टॉपिक मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी नो नहीं कहती। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। लेकिन मैडम बात फिर वहीं आ जाती है कि जॉनेलिया ने एक दफ़ा बात कही थी कि तू मेरा हौसला तो देख, तू मुझे दाद तो दे, कि मगर मुझे अब शौक़ कमाल भी नहीं और खौफ जवाल भी नहीं। थैंक यू। Ma'am. Thank you so much, madam. That's right. Thank you so much, madam. Thank you so much for bridging the gap between science and society and politics. So, to appreciate your contributions and your time and effort, I request Professor Beena, Professor Saima Salim, OWSD General Secretary, Professor Dr. Satvazara, Ms. Shahida Qureshi, and Professor Sadia Gelani, Professor Afshin Aman, on the stage to present you with the shields and souvenirs. नहीं बेटा इजाज़त दे दो, क्योंकि मैं बताऊं एक जगह और जाना है और मैं आपसे रास्ता पूछ रही थी। So nice of you, ma'am. So nice. Ladies and gentlemen, you're requested to enjoy lunch till 1:30, 1 o'clock till 1:30, and then you're expected to be at the poster presentations. The participants who are presenting the posters are requested to be on their poster, with their poster, to be available for the evaluation. At 2 o'clock, we are expecting to start the oral presentations sharp. So please be back on time. Thank you very much.